First of all, I welcome you all in this special New Year space in which we are going to discuss about sectorial outlook for 2023. So I'll try to share my understanding of sectors which which are going to perform better than other sectors, or I would say uh, sectors which are going to outperform the market probably. Right. So this is a better line. So we're going to discuss that. Before that, if you remember, let's recap what we have discussed in 2022. So in the start of 2022, I've clearly mentioned that sectors which have performed very well in 2021 would not perform well in 2022, or whatever sectors we thought of key uh, which have done well in 2021 uh, would not be able to continue that outperformance or that kind of performance in 2022, and the similar the kind of performance or underperformance we have seen, whether it is metal or chemical, IT, lot of sectors, right? And in the start, we have discussed that PSUs are going to lead. So PSU was a theme of 2022. Then in PSU, so there are a lot of stocks. So in PSUs, we found key. Initially, we found defense in March 2022. We found defense as a theme, which did very well. And later in October, we found railway as a very good theme. And that theme has done better than defense for us, right? So we have played couple of themes or couple of sectors. So most of the sectors have done very well, except the few one, right? So that could be your that some agrochemical names. I was thinking, I was assuming that agrochemical sector would do well, but it could not able to perform right at par with our expectation, or you can say it has underperformed our expectations. Uh, so in 2023, challenges are very complex, or you can say things are very complex in nature, because the kind of backlog, or you can say the kind of base we have for 2023. So base year is year 2022, right? So in base year we did pretty well in H1 2022. So in H1 2022, there are a lot of sectors and stocks which have done well. So we won't be able to repeat that outperformance, right? Because the base is very high, specifically in retail. So there are a lot of sectors. It could be your metal as well, right? So the thing is, there are a lot of challenges, or there are a lot of headwinds that we have seen during H2 2022, right? And all those headwinds were repercussion of Russia Ukraine war. उसी की वजह से हुआ है सब कुछ, right? So whether it was a supply gap, or the inflationary pressure and all, or the fall in demand, right? Specifically in Europe, right? So we have seen drastic fall in demand, specifically in Europe region, followed by America, followed by some other continents, right? And the similar kind of things we are witnessing in consumer discretionary segment and durable segment, right? And these are my readings of last 2 months. I'm not saying कि ये 6 महीने से खराब है, but last 2 months का जो numbers था, it was pretty much lower than expectation, or there were many names or many companies which didn't grow in that period even, right? So and all these companies have done very well in last fiscal, or you can say in last year, in the same period. So I'm talking about that October, November, December quarter, right? And December is too dull, is too dull, that retail names are coming out of coming with a lot of discounts and all, right? Just to liquidate their inventory. So retailers के पास, they don't have any cushion, right? Whenever they see कि sell-throughs are not good, or they're not able to sell
the products in full price, specifically apparel, footwear or travel gears and all. So what they do, they generally come with sale and all. So we generally think कि sale आता है तो मतलब brands generally do well. They do well in sales, but मतलब profit में अच्छा नहीं करते हैं, right? So if any brand is offering you a 50%, 60% discount, then that brand can push its numbers, but that brand can by pushing its numbers in sale or in discount, it can squeeze its margins, right? So margin का squeeze बहुत तगड़ा होता है. Last year margins were pretty high, and discounting was very less cause of उसकी वजह से textile stock did very well. And you know what happened to textile stocks? If you remember my tweet, I was pretty much bullish on textile stocks, but after May I was cautious because the on ground situation was that कि production बहुत ज़्यादा हो गया था, and that production could not able to meet the demand for most of the companies, and I turned cautious on textile stocks, and I'm still cautious, but I see कि ये decline जो है खत्म होगा probably in next 4-5 months, and we will get very good opportunities in textile sector. So now you would be thinking now which are the sectors where we need to focus. So I will say PSU again. So banks have done very well, whether defense PSUs have done very well, and there are a lot of other PSUs which have done very well. So I believe bearing banks को मतलब छुइए ज़्यादा, the other PSUs or the PSUs that those PSUs could be from OMC. You can write it down, or those PSUs can be from power sector as well. So these are the PSUs, power and gas. These are the PSUs which are going to do well in 2023. My bet is very high on OMCs, right? Because OMCs have underperformed the entire PSU basket as well as the market from last 1.5 years, specifically after that Russia-Ukraine war. Uske baad to you have seen a very high pressure on the margins and all. So I guess there are a lot of things which are already discounted in the business as well as in the price. तो बिजनेस तो 2 क्वार्टर से ग्रो कर नहीं रहा है उनका, या कह सकते हो कि डिक्लाइन है प्रॉफिट में, बट थिंग्स आर डिस्काउंटेड इन द प्राइस, आई विल से, right? So what we see as a trader, as an investor, what we want price to move up rather than profit and all. So whenever profit goes up, it doesn't mean price would also go up, right? Our priority is that ki price should go up rather than profit, right? So more than profit, our priority is price, right? If price is not moving, we will not earn, irrespective of whatever company is doing in the business or whatever wonders company is doing in the business. So remember that rule. So I believe lot of things have already discounted in OMC's price. So it could be IOC, BPCL. Matlab you can pick basis your understanding, but I'm not sharing any name and all. I'll share probably in educational space, but this is the one area plus power. So these PSUs can do well in 2023, number one. Number two, pharma. Pharma we need to be very selective. We need to pick the stocks where business is domestic oriented rather than exports, right? Means where 70 or 80% business is coming from, let's say, domestic area or some non-regulated markets. So these companies are expected to do better than the companies which are more of export driven, which are into export driven markets or the regulated ones, specifically US. So like there are a lot of companies, it could be your Torrent हो गया, बहुत सारी companies हैं where sales is मतलब Orbindo हो गया, 50% sale is coming from US only. So that's a big market. Any challenge is there और कुछ भी ऐसा regulatory आता है तो it will be a challenge or it will be a trouble for that company. So we need to pick those companies जहाँ पे जो domestically ज़्यादा deal कर रही हैं and which are in the niche segment, right? And I believe those companies are going to do well in 2023 in pharma space, right? Number three, sector number three could be your metals as well, because metals are undergoing a very good price and time correction. Probably we'll see the last leg of that
प्राइस एंड टाइम करेक्शन. ऑलरेडी टाइम करेक्शन को लगभग 1 साल होने वाला है, बट I believe there will be one more price correction or final time correction that we will see in next 2-3 months. उसके बाद if we get opportunities in good companies metals में, तो शायद it will be very good opportunity to to have metal sector for medium to long term. Short term में चलता रहेगा. Short term में maybe you will see some spike due to price rise and all. China is opening up probably after a week. तो वो हो सकता है, right? I'm talking about medium term only. There is one more sector which can do well, and that sector could be media. So media is not high conviction; it is a low conviction sector. Reason being is that media is specifically, I'm talking about the companies which are there in that TV space and all, right? Reason being, it is going to be an election heavy year. काफी states में काफी जगह पे elections हैं और बहुत सारी चीजें हैं, right? So जब भी elections होते हैं तो media shares का अच्छा खासा they get very good advertisement and all, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. Plus there are very some company specific triggers in digital market as well. It could be for TV18 all, ये सब के लिए. तो not a high conviction sector, but it could be a dark horse, basis my understanding, because again it is going under a very good time price correction पिछले 1 साल से. Next, not from last 1 year, but probably from last 2-3 years, right? Another sector that can do well in 2023 is something which I'll tell you after 15 minutes. Right? Now, I hope you would have got the hints and all, and you would have written down the sector names and all. Now, I would like to invite some questions, right? And I hope ki whatever sectorial studies or whatever sectors I have shared, so those views and those sectors would have helped you to pick stocks from those sectors, specifically in railway and defense space. My question is on banking sector. Last year, banking sector is outperformed the market, like private sector banks like HDFC Bank, ICICI Bank, and also credit cycle is on up, is in the growing trajectory. What is your view on banking sector going forward in 2023? So it will not perform. It will not show the similar kind of performance that we have seen in 2022. I guess it was one of the best year, and I see time-wise and price-wise consolidation in 2023 for banking sector. We may see a new high in next 2-3 months, but after that, I will see a typical time and price correction in banking stocks. We will not see the similar kind of performance that we have seen in 2022. Okay, so you are hoping when that news was bad, when there was a bad news for banks and all, no? When there was a worry or there are a lot of red flags in the economy, and that is the best time to buy the banks, because that time you get lot of things at bargain. But when everything is good now, so this is my learning from stock market. When everything is looking good, don't buy the banks. okay, Whether it is credit growth or NIMs and all, anything, right? So that is not the right time to buy the banks. I'll see a time and price wise consolidation, or you can say time and price correction in 2023 for specifically for banking space. So I'll avoid medium to long term investing in not long term, but medium term investing in banking stocks. Short term, for 5-10%, you may pick. Okay, sir. Thank you so much. That's all from my side. Okay. Thank you, Shri. IT, somebody is messaging me, IT. So IT is also an avoid for me. Though there are some stocks, again, so in IT, focus on stocks which are more into telecommunication or anything which is not export oriented,
where their presence is mostly, domestic. So wahan pe you can focus. Those companies have significantly corrected, or you can say have already trading at a very good P comparing the sector. So there we have a very good risk and reward. Because we may see some negative surprises starting that earning season from 9th or 10th Jan. So सकता है we'll see a lot of companies. Lot of IT companies will downgrade, or I will say jahan pe they will see they will they will not share any you can say good growth forecast. They will share more challenges in H1 2023 specifically. So the larger trend we've already seen in US and all. वहाँ पे companies have already done a lot of attrition सब कर दिया है. So I would say कि the similar kind of trend, or you can say the similar kind of underperformance you're going to see in IT sector. So it's not the time to buy. Maybe you can play a bounce, but for long-term investing, we may get another opportunity in 2023. But yes, there are some stocks which are into telecommunications and all, or the stocks which have domestic exposure, more of domestic exposure, more than 70-80%. So they can do well. IT mein. Okay, sir. I have another question related to pharma sector, sir. Is it okay? Yes, you can ask. Actually, you are telling that pharma sector may see you are bullish on that sector, particularly in domestic pharma. Right. What I mean, why you are making it? Why for you? Why what is making you bullish on pharma sector? Is it raw material prices coming down, or is there any particular reason regarding the domestic? Yes. Yeah. So you are right. Raw material prices blended with the downgrade which we expected. So 2020 was a rocking year for entire pharma industry, right? And most of the pharma stocks were topped out in during second wave. So that was in April 2021 and May 2021. So after that, most of the stocks have not seen those prices, right? So it's a typical 1.5 year correction, or probably it will be a 2 year correction in time-wise or price-wise correction in 2023, right? But there are some names, some pharma names specifically, which have domestic exposure. So these pharma names have done better than the names which are export-oriented, right? You can pick some companies. It could be your, this one of my favorite, Lincoln Pharma. So there are more names. Indoco, right? So these pharma names have done well, right? Where we have not witnessed the significant margin downgrade or that revenue downgrade and all. So I believe now they are coming out of that consolidation, and most of the things have already been discounted in the price, right? So these companies will be the first companies which are going to participate, or which are going to outperform in next pharma rally, right? Because the kind of correction or the kind of price timeless correction they have seen. So I believe it is going to end sooner than later, specifically in domestically or the companies which have more of domestic exposure in pharma. Lincoln ho gaya, there are more names. You can check RPG as well. So these kind of companies are going to do well. So companies which have outperformed in last 1.5 year time price correction.
So you can check a lot more names. There are 5, 6, or 7, 8 companies which have done well. Your view on CDMO space, like CRAMS, these spaces. What is your view on that? Because it's also come under pharma and also, doing business in domestic as well as export as well. So I guess CDMO, the companies which have completed their expansion, or companies which have started their capacities, so these companies are going to do well, right? Because the kind of margin squeeze, or whatever whatever cost we generally bear in that entire expansion. So they have already bear that cost. And if any particular company has completed the expansion, or it is going to complete the expansion in next 3-4 months, so these companies you can look at, right? And I guess that expansion or whatever cost they have beared, I'm sure most of the companies have done through internal, like, accruals, right? Accruals, But yeah. there are a couple of companies which have taken debt as well. So probably companies which have done the expansion, completed the expansion with internal accruals, you can look at in CDMO space. So that's a very good space for long term. So that can also do well. Again, exposure should be more of domestic rather than exports. So avoid companies which are getting more than 40% from US. Okay, sir. Thank you. That's all from my side. Thank you. So now we have Manish ji with us. So like we are discussing ki IT may we need to avoid. Why we need to avoid? So Manish ji is the right person. So he can share his insights. Yes, Manish ji. हाँ सर. अरे मैं तो आपको क्वेश्चन पूछने वाला था, आपने मुझे ही बोलने को बोल दिया. ठीक है, कोई बात नहीं. आईटी का I think the view why it will not do well is, I mean, look at all our biggies. IT is essentially an export oriented market, and 80+% of revenue comes from Western clients, that is US predominantly, and next is Europe. And आप देखो वहां पे recession and the companies are on cutting back mode, and these are all Fortune 500 companies, right? Correct. Be it apna banks, be it Nike, I mean all these companies which outsource to our Indian players. And their IT budgets have taken a huge hit. I mean, though they are on the digital journey, cloud, वगैरह वो सब, I mean, all those things are fine. So whatever is happening will happen, but there is no incremental spend, because these companies, I mean, obviously they have, I mean, they are revisiting their own business models and their own businesses, EPS and all those things, right? So that's where it all ties to the US economy doing well. So whenever US economy starts doing well, that is when I think IT should start doing well, right? So I think that's how this whole, in short, if I can summarize, it is direct. I mean, one sector which is directly linked to US economy. So I will add one line to it. This view. So in last 1 year, or in last 8-10 months, what we have seen a significant PE de-rating. So there's a PE re-rating and there's a PE de-rating as well. So in IT sector, we have seen a PE de-rating, right? So PE has slashed to half. 40 ka PE companies were used to have, but now वो घट के 25-20 पे आ गया है. Going forward, we will see the EPS de-rating, right? तो अभी PE आधा हुआ है तो प्राइस आधा हो गया, राइट? ईपीएस से ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, बट अभी ईपीएस भी इफेक्ट करेगा व्हाट मनीष जी इज सेइंग, क्योंकि अर्निंग्स में थोड़ा डाउनग्रेड आएगा. तो जब इफ ईपीएस इज गोइंग टू फॉल लेट्स से 20%, 30% from here on, because there is a challenge in the earning, बहुत सारा cost cutting हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो there are a lot of companies, small companies specifically, which are going to lose the business. ये पूरा cost cutting सर इससे सारा, right? So that 20%, 30% fall in the bottom line EPS में अगर होता है, या top line में let's say 10 to 15% decline होता है,
छोटी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी की नहीं, बड़ी में इतना मुश्किल है। तो उनका ईपीएस भी 10 से 15% या 20% भी गिर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 20% ईपीएस को कंपनीज आर गोइंग टू डिस्काउंट, और यू कैन से मार्केट इज गोइंग टू डिस्काउंट। तो लेट्स से पहले एनी पर्टिकुलर शेयर इज हैविंग एन ईपीएस ऑफ लेट्स से 50 रुपीज, और उसका पी था 40 का, 45 का, तो इट यूज टू ट्रेड एट 2000 रुपीज लेवल। अभी उसका पी गिर के जो हो गया 25 हो गया है, और ईपीएस जो है वो 20-22 ही है, राइट? तो the price would be around 1100 or 1200, so it means a 40% correction from the top. But अभी अगर ईपीएस भी let's say 10-20% गिरेगा यहाँ से, so we are assuming कि ईपीएस घट के 16 हो जाएगा, और पी ऑलरेडी आपका 20 पे चल रहा है, उसमें तो री रेटिंग होएगा नहीं until unless अर्निंग कम्स बैक, राइट? तो व्हाट वुड बी द प्राइस? तो आपका जो प्राइस है वो आपका और कम हो जाएगा वहां पे, राइट? तो प्राइस वुड बी अराउंड आपका, मतलब इसको कर लीजिए कितना होगा, मतलब कुछ 500-600 के आसपास आएगा मोटा मोटा। सॉरी, अपना 40 से आपका पी घट के यहाँ पे आया 20 पे। अभी आपका 20 पी भी मान के चलते हो, ईपीएस आपका 22-23 था, तो आपने 1000 के करीब प्राइस पा लिया, लेकिन ईपीएस आपका घट के 16-17 हो गया, तो यहाँ पे आपका जो प्राइस है कितना आ गया? 320 रुपया, राइट? तो इस तरीके से मतलब विल सी द डाउनग्रेड एंड ऑल। तो मतलब थिंग्स विल नॉट बी लाइक व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अलग अलग शेयर का अलग अलग कहानी होएगा, कहीं पे 10% और गिरावट आएगा, कहीं पे 20% और आ सकता है, कहीं पे हो सकता है गिरावट ना भी आए, right? Specifically, companies which are there in that domestic oriented market, or you can say in the space जहाँ पे there is a demand, or the demand is very high, that like Root Mobile type का कोई कंपनी है, तो उनका business is pretty much और एक secured. चीज सब, I think one more thing which people should just focus, right, is the revenue of these companies in dollar terms. अपने पिछले 2-3 क्वार्टर में देखोगे तो there is still nominal 2-3% का growth दिख रहा है, Right. but entire of that growth has come in rupee Right. terms. Dollar terms, most companies are flat at best, right? Because rupee देखो last year 73-74 रेंज से 82 पे पहुंच गया. Correct. That's a huge uptick that has helped these companies, right? So rupee थोड़ा सा फिर से 78-79 में पहुंच जाएगा और यूएस इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होती है, तो then I mean that's going to be another double whammy. So काफी सारे हेडविंड्स है अभी, होना है। नहीं, सही बोल रहे हो। तो अभी तो मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ इसको। तो लास्ट टाइम आपका जब रुपी था आपका 73 था, तो अभी अगर डॉलर अपना रुपी डेप्रिशिएट हो गया है, तो उससे दो नुकसान है। तो एक तो डॉलर टर्म्स में अर्निंग नहीं बढ़ेगी, राइट? पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा कम हो जाएगा। दूसरा क्या, देयर इज अनदर थिंग कि आपका जो एट्रिशन है वो भी बढ़ा है। तो एट्रिशन जब भी बढ़ता है ना, तो आप जब एम्प्लॉइज आर लाइक एन एसेट फॉर आईटी कंपनीज के लिए, तो बहुत बड़े एसेट्स होते हैं। तो कोई भी आपको जल्दी से नया एम्प्लॉय चाहिए, तो आपको उसका जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग है बहुत हाई पड़ता है, जो भी हो भी रहा है। सो ये सब डॉलर ऊपर जाने की वजह से आपको आपका जो बाहर का स्टाफ होगा उसको आपको पे भी ज्यादा करना पड़ा होगा, राइट? तो अल्टीमेटली जो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ के ही आएगा। पिछले 2-3 महीनों में देखोगे धीरे धीरे आगे, और हो सकता है थोड़ा और भी बढ़े। रीजन बीइंग कंपनीज आर डूइंग दैट कॉस्ट कटिंग, और कंपनीज आर डूइंग दैट चटनी एंड ऑल, राइट? पूरा ये लोग टेम्पररी या जो भी है लोगों को यहाँ पे निकाल रहे हैं या जाने को बोल रहे हैं, राइट? तो दिस इज अ साइन ऑफ वरी। मतलब व्हाट दे आर सीइंग इन नेक्स्ट 6 मंथ, मतलब उनको कुछ लग रहा है कि 6 महीने में हमारी अर्निंग की हालत सही नहीं रहेगी। तो रीजन बीइंग दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द वर्स्ट, कि भाई चलो चीजें ठीक हो जाएंगी तो विल रीहायर, राइट? तो ये ले ऑफ्स जो है वो बंद हो जाएंगे आपके, या बोल सकते हो कि फिर उसके बाद हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो इतने सारे ले ऑफ्स, अगर मनीष जी मेरे को करेक्ट करना इफ आई एम रॉन्ग, शायद कोविड में भी नहीं हुए होंगे जहां तक मेरे को लगता है। अरे नहीं, कोविड में तो बिल्कुल नहीं हुए थे। कोविड में क्या हो गया था ना, बहुत सारे कंपनीज ने अपने, क्योंकि वहां पे फ्री मनीज बट रहा था तब यूएस में, प्रिंटिंग चल रही थी, सो दैट्स वेयर सारे क्लाइंट्स के पास बहुत सारे बजट्स थे, और ऑफिसेस सबके बंद थे आईटी कंपनीज के, सो सब लोग घर से काम कर रहे थे, सो विच हैज हेल्प्ड एक्चुअली ऑल दीज कंपनीज टू सेव ऑन देयर ओपेक्स कॉस्ट, राइट?
राइट. सो नाउ सब कुछ ओपन हो गया है, एम्प्लॉयज आर स्टार्टेड कमिंग टू ऑफिस टू अवॉइड एट्रिशन. सो कंपनी का ऑपेक्स भी ऊपर जाने वाला है. सो कोविड के टाइम वाज लाइक क्या बोलते हैं ना, वो बूम डेज थे आईटी के लिए, राइट. बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स. उससे मतलब आईटी के लिए तो इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. मतलब उससे बढ़िया कोई पीरियड हो नहीं सकता है कि कोई खर्चा ही एब्सोल्युटली. नहीं था और मतलब लोग भी जाने को राजी नहीं थे. एक होता है ना कि ऑटोमेटिकली आपका जो एट्रिशन है वो भी कम हो गया था. आपको मतलब सबको था कि यार चलो जहां काम कर रहे हैं करते रहो. At least for 6 months when we were in that pandemic, first phase of that pandemic, people would have thought कि अभी क्या छोड़े. मतलब जब तक कोविड का इंजेक्शन नहीं आ जाता, कुछ नहीं आया था, भाई जिस कंपनी में काम कर रहे हो ठीक हो, अच्छा काम कर रहे हो, घर से काम कर रहे हो, छोड़ मत तू. राइट. यू आर गेटिंग गुड मनी हेयर. घर घर बैठे बैठे आपको अच्छा पैसा मिल रहा है. तो दैट वाज द अनदर रीजन. सो ऑल इन ऑल अगर मैं अपने देखें आप लोग सभी लोग, तो मेरा मानना यही है कि आपका आईटी कंपनीज में बी सेलेक्टिव, वेरी सेलेक्टिव. डोंट गेट गंग हो कि भाई अब तो करेक्शन बहुत हो गया है, इंडेक्स 20-30% गिर गया है. राइट. उस 30% गिरने का रीजन है वो आपको मैंने बता दिया है. अनदर यहाँ से शायद 10-20% और गिरावट आए, इंडेक्स में भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है. शायद आईटी इंडेक्स को हम 20-22 हजार पे भी देख सकते हैं प्रॉब्ली इन 2023. राइट. Obviously I may go wrong here as well, but assumption is there. We have seen the PE de-rating. PE अभी तो PE में गिरावट देखिए आप. लास्ट ईयर का एक साल पहले का PE चेक करिए आईटी कंपनीज का और आज का PE चेक करिए. मतलब हाफ के करीब हो गया है, 30-40% करेक्शन हो गया वहां पे. नाउ विल सी द ईपीएस डी रेटिंग. अभी ईपीएस जो है वो शायद गिर के आएंगे इस साल में, पहले दूसरे क्वार्टर में, तो उसको शायद मार्केट डिस्काउंट करेगा. एंड विल गेट द फर्स्ट हिंट प्रॉब्ली इन ऑन 9, 10 और 11. तभी भी टीसीएस या इन्फोसिस के नंबर आने शुरू हो जाएंगे, या विल गेट द क्लैरिटी बाय 20th of Jan. तब तक बड़े कंपनीज के नंबर आ जाएंगे, ये लोग सब बता देंगे आपको कि आगे व्हाट इज द आउटलुक, जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. सो कीप अ टाइट वॉच ऑन दैट. आउटलुक से बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी. और आई वुड सजेस्ट सभी कंपनीज का आउटलुक देखिए आप. नॉट ओनली कि एक दो ने ठीक हो सकता है, टीसीएस बोले कि हमारे लिए ठीक है भाई, इतना कोई चैलेंज नहीं है, पर इन्फोसिस और एचसीएल तो अभी से बोल रहा है कि हमारे लिए चैलेंज है. तो वो वी नीड टू वॉच. राइट. Somebody is asking कि whether market correction is over for short term और कोई correction आ सकता है. So brother देखो, short term में correction was expected, but इतना fast आएगा it was not expected. So दो चीजें हो सकती हैं. पहला, the kind of intensity that we have seen fall intensity we have seen between 21st to 23 December. इट वॉज लाइक कि इससे पहले टाइम करेक्शन चल रहा था और एकदम से मार्केट को लगा कि मेरे को प्राइस करेक्शन जो मेरा पेंडिंग है वो पूरा करना है, और मार्केट ने 3 दिन में पूरा कर दिया. सो इफ दैट वाज द टिपिकल टाइम एंड प्राइस करेक्शन कंप्लीशन 26 से और फिर वो टर्न हो गया मार्केट, अगर एक वो चीज थी तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई करेक्शन और आएगी नहीं और मार्केट शायद 5-6 हफ्ते में अच्छा कर सकता है. इफ रीडिंग इज गुड इन और इफ रीडिंग गोज वेल, basis what we are thinking इस तरीके से कि there was a time correction in the Nifty and specifically in small caps. Small caps में आप देखो ना, इतना राइस आ ही नहीं रहा था कुछ भी. सितंबर के फॉल के बाद स्मॉल कैप्स में सेक्टर स्पेसिफिक रैली आई थी, इंडेक्स में रैली नहीं आया था. स्मॉल कैप इंडेक्स में इतना ज्यादा आ रहा था, गिर रहा था, आ रहा था, गिर रहा था, और मुश्किल से उसने फिर 96-97 पार किया था. उसके ऊपर भी ज्यादा दिन रह नहीं पाया, बट जो भी डाइवर्जेंस थे वो पॉजिटिव हो गए. सो आई बिलीव प्राइस करेक्शन एक पेंडिंग था फाइनल. उस टाइम करेक्शन के बाद वो अगर आ गया है तो गुड डेज एड फॉर स्मॉल कैप इंडेक्स, प्रॉब्ली फॉर नेक्स्ट 5-6 वीक्स, आप इतना बोल सकते हो. अगर वो नहीं हुआ है, सेकंड रीडिंग इज दैट स्मॉल कैप इंडेक्स कुड नॉट एबल टू मेक अ न्यू हाई अबव 10,200. It had made a lower high and now it had made a lower low as well. मतलब 9178 72 को काटा था इसने and 9156 का it has made a low on 20 I guess 26 दिसंबर को शायद बनाया है. तो basis that reading now it is as of now it is in neutral zone, but I will say कि अगर ये वापस से 9500 के नीचे जाता है और टिकता है तो we will see one more lower low in next 5-6 weeks. ये दोनों possibilities हैं. Now you would be thinking कि दोनों में से अगर कुछ भी हो सकता है, तो what we should do, wait for Monday and Tuesday's price action. अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है, it will go in a hurry, believe me.
मतलब अगर मार्केट ने जिस तरीके से प्राइस टाइम करेक्शन पूरा किया है, खासकर प्राइस करेक्शन 3 दिन में, और मार्केट को ऊपर जाना है, तो पहली चाल है वो तेजी, मतलब फास्ट रहेगी। इट विल नॉट लेट द पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस फियर, बड़ी तेजी से ऊपर लेके जाएगा, राइट। और एक लेवल पे जाके, मतलब ऐसी लेवल पे चले जाएगा जहां पे लोग लेंगे नहीं, लोगों को लगेगा अब गिरेगा तो लेंगे, और वहां से फिर चलता जाएगा। शायद यहाँ से हो सकता है 8 से 10% रैली भी आ जाए 1-1.5 महीना में स्मॉल कैप इंडेक्स में। निफ्टी में शायद ज्यादा ना आए। और अगर अगले हफ्ते भी हम लोग जो लेवल्स मैंने शेयर किए हुए ऑलरेडी, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, 9800 उसमें हो गया स्मॉल कैप में, और आपका निफ्टी में 18,500-600, ये अगर जल्दी से अगले हफ्ते भी हम क्रॉस नहीं करते हैं तो, और लोअर साइड में कोई लेवल तोड़ देते हैं, तो मान के चलिए कि ये करेक्शन थोड़ी और बढ़ेगी। मतलब हमने प्राइस करेक्शन कर दी है, हमारी टाइम करेक्शन थोड़ी और बढ़ेगी, हल्की हल्की प्राइस भी होगी, एंड इट विल कंटिन्यू इन जनवरी एज वेल, प्रॉब्ली आफ्टर 10 और 12 जनवरी। मतलब अगले हफ्ते अगर हम लोग इतना नहीं हिल पाते हैं, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द ग्लोबल क्यूज एज वेल, कि ग्लोबल क्यूज क्या रहते हैं क्या नहीं रहते हैं। सो ग्लोबल क्यूज आर आल्सो न्यूट्रल टू नेगेटिव अभी तक, तो कोई ऐसा खास पॉजिटिव है नहीं, बिकॉज यील्ड्स आर अप्रोचिंग 4 लेवल अगेन। जो 10 ईयर का यूएस का यील्ड है और 30 ईयर का यील्ड है, वो वापस से 4 के करीब जा रहे हैं। सो दैट इज नॉट गुड फॉर इक्विटीज। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। Chemical company, somebody is asking me. So chemical में be selective again. Chemical में now let's see. China is opening up. तो commodity chemicals जो है वहां पे we may see some pressure. क्योंकि चाइना जैसे ही ओपन होएगा, अब अगर दैट न्यूज इज राइट, तो इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर, मतलब इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस एवरीथिंग। तो वहां पे प्राइस राइज तो आएगा, बट सप्लाई जो है वो भी बढ़ेगी, राइट। तो डिमांड अगर नहीं हुआ तो प्राइसेस गिरने हैं वहां पे, राइट। स्पेसिफिकली कॉमोडिटी केमिकल्स में बहुत जल्दी होता है ये। सो बी स्पेसिफिक, बी विद द कंपनीज विच आर इन दैट स्पेशलिटी केमिकल स्पेस, वहीं पे शायद लग रहा है कुछ परफॉर्मेंस आ सकता है। बाकी तो थोड़ा और वेट करने का है अभी। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, मतलब somebody is saying कि metal cycle correction. Okay, so देखो dear, there is a difference between cycle and correction. Cycle is big, correction is something जो हर cycle में आती है. So if cycle is up, let's say, right, you will see lot of up legs and down legs, दोनों रहेगा, corrections भी रहेंगे, rise भी रहेंगे. Similarly cycle जब नीचे रहती है, when cycle is down, तो उसमें भी बहुत सारे corrections और बहुत सारे rise रहते हैं. So I need to see which sector is in which cycle. So as of now metals are in up cycle, डाउन साइकिल में नहीं है वो। डाउन साइकिल एक थी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे दे आर इन अप साइकिल, राइट। शॉर्ट टर्म फ्रेम में अगर बोलोगे तो भी डाउन साइकिल में नहीं है। इंडेक्स तो मतलब कितना है, मतलब 8-10% दूर होगा ऑल टाइम हाई से। नो दे आर, मतलब दे आर इन अप साइकिल। स्टॉक्स का जो करेक्शन है वो भी धीरे धीरे आप देख रहे हो कई जगह पे पूरा हो रहा है, और पार्टिसिपेशन वहां पे आ रहा है ऊपर की तरफ में। तो लेट्स सी नेक्स्ट अप साइकिल कब स्टार्ट होती है वहां पे, या यही जो साइकिल है थोड़ी और टाइम करेक्शन होता है। हाउ टू आइडेंटिफाई अर्ली सेक्टर रोटेशन, बहुत सारा न्यूज पढ़ना पड़ेगा सर, और बहुत सारे स्टॉक्स के प्राइसेस देखने पड़ेंगे। मतलब देयर इज ए ऑप्शन इन दिस ट्रेडिंग व्यू, यू कैन मेक योर ओन इंडेक्स अगर इंडेक्स नहीं है तो। रेस्ट आपको जो सेक्टोरियल इंडेक्स है वही बता देगा। Stock specific, sir, I will not share any stock specific recommendation. I'll share the names of the companies where I'm studying or where I'm going to invest, or I'm to specifically companies where I'm going to trade. So I'll share the names of those stocks in my community only. सर एक तो पार्ट जो मेरा था वो कवर हो गया. वन वाज, आई मीन, चाइना ओपनिंग अप, will it have any impact on chemicals? I think you have covered that. The other part, which sector which you mentioned, is power. Right. Now power में बहुत सारे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन है, जनरेशन वाले कंपनीज है, Right. एंड काफी सारा डेट है कंपनीज के ऊपर. Right. मतलब बहुत सारे, मगर क्योंकि पावर में तो दैट इज लाइक, मतलब ग्रो करना है तो डेट ही लेते हैं कंपनीज मेजॉरिटी. Right. तो पावर में एनी स्पेसिफिक
क्या बोलते हैं तो ना, पावर में सब आई एरिया। आई वुड से कि आप पावर में अगर आपको जाने का है तो दो या तीन टाइप की पावर कंपनीज में जा सकते हो। पहला, कंपनीज विच आर इनटू सोलर पावर, राइट, जो सोलर पावर में है या हाइड्रो में है, इन सब में है। अल्टीमेटली पावर का जो कंजप्शन है बढ़ना है, इट्स एन एफएमसीजी। आने वाला टाइम पे वी नीड मोर पावर, राइट। तो लाइक समबडी वाज सेइंग कि एसी पेनिट्रेशन इज वेरी लो, राइट, मतलब 15, 16, 17% इंडिया में, एंड इट इज गोइंग टू रीच एट लेट्स से 50% बाय 2030। तो अगर वो होना है तो उसके लिए पावर तो चाहिए आपको, यू विल नीड मोर पावर आउटपुट। सिमिलरली ईवीज जिस तरीके से बढ़ रही हैं, तो अगेन यू नीड मोर पावर स्टेशंस और चार्जिंग स्टेशंस एंड ऑल। तो पावर का जो यूज है सिग्निफिकेंटली बढ़ना है। सो दो कंपनीज पसंद है यहाँ पे। पहली जो मल्टीपल टाइप्स की पावर बना रहे हैं, स्पेसिफिकली सोलर पे काफी ज्यादा फोकस है, बिकॉज सबसे सस्ता अगर कोई पावर है आज की डेट में, मतलब जिसमें खर्चा नहीं आता है और बिग भी ठीक ठाक रेट पे जाता है, ठीक ठाक बच जाता है, वो सोलर ही है, राइट। बाकी सब मोड्स ऑफ जो पावर है वहां पे यू नीड लॉट ऑफ केपेक्स एंड ऑल, बहुत बड़ा आपको कैपेसिटी चाहिए। तो जिन्होंने बना लिया है ऑलरेडी, एनटीपीसी हो गया, एसजेवीएन हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने बना लिया, ऑलरेडी बना लिया है, मतलब जो हाइड्रो पावर में है या किसी और फॉर्म ऑफ पावर में है, राइट। तो अब ये क्या है, अब जैसे एसजेवीएन का मैंने नाम ले रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, एनटीपीसी हो गया, ये सब धीरे धीरे आप देखो ना, ये सारी कंपनी सोलर में आ रही हैं धीरे धीरे, इनके बहुत सारे सोलर के जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं। इवन आईओसी, अब देखो ना, आईओसी भी खुद सोलर में जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज थी किसी कंपनी का कि उसने आईओसी बीएचईएल पता नहीं किनके साथ टाइप किया, पूरा बहुत बड़ा पावर का सोलर पावर का सेटअप करने के लिए, राइट। तो ये सब चीजें हो रही है, तो इन कंपनीज पे ध्यान देना है जो सोलर पावर में जा रही हैं, नए वेंचर्स कर रही हैं, और उनके पास अच्छा खासा केपेक्स मतलब करने के लिए पैसा भी है, मतलब बैलेंस शीट वगैरह। तो ये सब सरकारी कंपनीज के पास है ये सारा। ट्रांसमिशन में नहीं जाना है, ट्रांसमिशन में मार्जिन आर वेरी थिन और वो बैकलॉग रहता है केबल सेक्टर में। पर बनेगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होएगा, राइट। तो ये सब वायर्स और केबल्स के थ्रू होना है, राइट। जितना किसी भी मोड का पावर बना लीजिए आप, हाइड्रो पावर बना लो, सोलर बना लो, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट पावर विद द हेल्प ऑफ केबल एंड वायर्स ओनली, राइट। तो नेक्स्ट सेगमेंट कुड बी केबल्स एंड वायर्स। तो ये वो सेगमेंट है जहां पे अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है। जितना आप जितनी कैपेसिटी बढ़ेगी उतना आपको केबल्स और ये सब चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए। जो ट्रांसमिट करने वाली कंपनी से वो दिक्कत में रहती हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत रहता है ये। ओके, आई होप दिस स्पेस वुड हैव हेल्प्ड यू in building understanding of sectors and all. Please do share your feedback, what you have learned from this space. जो भी tweet है, just reply on that tweet only, which is for space. Stocks, no sir, I will not share any stock specific thing. I've already shared the sectors and all. Stocks बहुत हैं, कुछ stocks के नाम भी ले लिए, उनको भी study कर सकते हो. It will take time, but be very choosy, be very selective, because in 2023 मतलब you will not get low hanging fruits. मतलब it is even मतलब for cherry pickers it is going to be a tough market, specifically the first half, पहले जो 5-6 महीने, it is going to be a tough market for cherry pickers as well, people who cherry pick the stocks and all, उनके लिए भी it will be tough. तो be selective and wait, राइट। एक साथ नहीं पूरा वो करने का है, राइट। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी गलत स्टॉक में फंस जाओ और ऐसे फंसो कि उससे निकल नहीं पाओगे आप जल्दी से। आई होप यू वुड बी गेटिंग माई पॉइंट्स। इंफ्रा इंजीनियरिंग कंपनीज आई गेस हो सकता है सर बजट के तक रन अप आ जाए। तो जिन कंपनीज पे डेट नहीं है ज्यादा, जिन कंपनीज के पास आने वाले 2 साल के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज विच हैव very good order backlog, or sorry, a very good order book for next 2-3 years, right? Big order book like ITD Cementation, Vartech, Wabag, there are some prominent names. Companies पे आप ध्यान रखिए, इस पे नहीं जाना है। Companies which are small in size and they have debt as well, because कोई भी down cycle इसमें आएगा इकोनॉमी में, then companies which are debt ridden, so these companies are going to face a pressure from banks and all ना, EMI का। तो वहां पे कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा हो, लेकिन आपके मार्जिन स्क्वीज होने ही होने हैं, ये चीज है। एंड देन मंदी अगर कोई आता है थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब स्पेसिफिकली यूएस और यूरोप की वजह से अगर हम लोग मंदी फेस करते हैं, तो उसमें नए ऑर्डर मिलने के छोटी कंपनी को चांसेस भी कम हो जाएंगे, डिम हो जाएंगे बिल्कुल।
राइट? सो इट विल बी टफ पीरियड। तो उसमें क्या होता है, जनरली छोटी कंपनीज करेक्ट करती हैं ज्यादा। बड़ी कंपनी जिनके पास ऑर्डर पूरा भरा पड़ा है 2-3 साल का, उनको ज्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, और अगर गलती से मिल जाए तो ले लेना उनको। व्हाट इज द लिंक ऑफ योर कम्युनिटी? सर, कम्युनिटी लिंक इज देयर इन द bio, where I share my trades, my medium term picks, where I invest. Share the that geopolitical analysis or any market understanding which I have. I used to share frequently, daily or once in 2 days. Whenever I think this need to be shared in the group, I generally share in the community. Thank you everyone, and please share your feedback of this space, what you have learned. I'm sure all of you would have got the credible inputs and all, and thank you for sharing your insights and well, specifically people who participated in that discussion or people who were speaker. Thank you. I wish you all a very good and happy new year 2023, and may God bless bless all of us with unlimited happiness and unstoppable success, blended with good health in 2023. So this is my tagline. Bye.